Turkey, my home. I was born and raised in Istanbul and have lived here all my life. मेरा नाम नूरबानू है और मैं तुर्की से हूँ and I love my country. लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ एक बहुत खूबसूरत मुल्क एक्सप्लोर करने जिसका नाम है पाकिस्तान. इस कंट्री को मैं हमेशा से एक्सप्लोर करना चाहती थी क्योंकि इसके बहुत सा जिक्र मैंने अपनी ग्रैंड मदर से सुना था. Yes, my grandmother. वो पाकिस्तानी तो नहीं लेकिन she was born in Pakistan in 1947 and migrated to Turkey in 1950s and her father's grave is still in Pakistan. So, it's time for me to go to this beautiful country to explore and chase the history. This is a goodbye note to my beautiful country. Merhaba, şu an Pakistan'dayım ve çok heyecanlıyım. मैं भूल गई हूँ मैं पाकिस्तान आ गई. Right now I'm in Pakistan and I'm so excited to explore this beautiful country. So let's start. Merhaba and assalamu alaikum. I have finally reached Pakistan. इस प्यारे मुल्क के journey मैं आज से शुरू करना जा रही हूँ and I am very lucky because I am starting my journey in Lahore, which is one of the most beautiful and historical cities of the world. जब बात करते हैं लाहौर शहर की सबसे पहले ज़हन में आता है मीनार पाकिस्तान, which is one of the most important monument of this country. तो फिर मैं शुरू करती हूँ अपने journey आप लोगों के साथ. क्या आप मेरे साथ पाकिस्तान एक्सप्लोर करोगे? Yes, then let's start. मीनार पाकिस्तान. ये है पाकिस्तान का नेशनल मोन्यूमेंट जो कि लोकेटेड है लाहौर के दिल में. ये मोन्यूमेंट बना हुआ है द ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर जो पार्क 329 एकर्स एरिया कवर करता है. After I read about Minar Pakistan, I came to know that this place is very important for Pakistanis. मैं ये tower देख के बहुत खुशी हुई because it reminds me of other towers in my country, Turkey. There are so many similarities, for example, Antalya Expo Tower, जो कि located है Antalya में, and the famous Galata Tower. Galata Tower भी बहुत important और historical towers में से एक है तुर्की में, और वो भी तुर्की के एक main city इस्तांबुल के दिल में है. 23 मार्च 1940 को इस पार्क में पाकिस्तान रिजोल्यूशन मंजूर हुई थी जिसका मतलब था कि पाकिस्तान बनने का फैसला हो गया है और फिर 1960 से 1968 का अरसा में मीनार पाकिस्तान तामीर हुआ था to mark this place as a historic and most important one for this country. The Greater Iqbal Park is so green and walking here makes me feel so refreshed. यहाँ आपको बहुत colorful flowers नज़र आता है. लोग यहाँ अपनी families को लेकर आता है for picnic.
founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, Ek Kaum, Ek Mulk, Ek Awaz, the famous lines of Jinnah. اور پھر مجھے پتہ چلا کہ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کا بہت بڑا رول تھا اس ملک کی آزادی میں، جس کی وجہ ان کا مادر ملت بھی کہتے ہیں. Women empowerment started way before the independence here. Wow! Tribute to all important people who worked here in the foundation of this country. Minar Pakistan has been a great start for me. As you can see, it's not only a historical place, but also a beautiful park where you can see so many beautiful flowers, and it's very green as well, and the greenery is kept well. So I'm very glad to be here, and I'm so excited to see other places as well. So let's move on. مینار پاکستان کے پاس یہاں کی بہت مشہور ماسک ہے جس کا نام بادشاہی ماسک. یہ بلڈ ہوئی تھی 1673 میں during the Mughal Empire era. Maybe not now, but I wish to visit it very soon. Of one of the most important gates of Lahore, which is also called Delhi Gate. And Delhi Gate is one of the most important gates of the whole city of Lahore. Chalo, this gate was built during Mughal Empire, and it reminds me of the walls in my city in Istanbul and Turkey. Turkey और पाकिस्तान में दरमियान बहुत similarities है, and it really excites me. So please come with me. thankful to my crew جو بہت helpful تھے میرے اندرون دلہی گیٹ کے ایکسپلوریشن میں. یہ جگہ اولڈ لاہور کے کلچر بہت اچھے سے ریپرزینٹ کرتی ہے. I'm so glad to be here. یہاں آپ کو ہر طرح کے ڈرائی فوڈ اور ڈرائیڈ سبزی ملتی ہے اور بھی بہت سے کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہے. Food, but also you get to find clothes here, and they are so vibrant. My next destination, the Persian-style bath which was built during the empire of Shah Jahan. Guys, اب میں ایکسپلور کرنے کے لیے وزیر خان حمام آئی ہوں جس کو شاہی حمام بھی کہتی ہے. So let's explore. Come with me.
बाय द वे आपकी उर्दू बहुत अच्छी है. बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश कर रही हूँ. अच्छा, तो और आप यहाँ पर कहाँ से आई हैं? मैं तुर्की से हूँ. टर्की से. तो अभी आपको ये बात बताऊं कि ये टर्की के बाग की तरह बना हुआ है. यहाँ पर हम अंदर जाके देखेंगे तो टर्की मैकेनिज्म आपको फील होगा, नजर आएगा, क्योंकि इस बाग को जब बनाया गया था 400 साल पहले, तो यहाँ पर उन्हीं रूल्स को फॉलो किया गया था जो कि टर्किश में बाग हुआ करते थे. इंटरेस्टिंग. यस. ओह, दैट्स ब्यूटीफुल. आपको पता है टर्की में बहुत सारे हमाम है, और मेरे ज़बान में, टर्की ज़बान में हमाम भी हमाम कहते हैं. ओह रियली, इट्स रियली अमेजिंग. और ये तो बहुत अच्छी बात है. और इसी वजह से मुझे ये भी पता लगा है कि उर्दू ज़ुबान और टर्की ज़बान की जो लैंग्वेजेस हैं सेम हैं, और कुछ वर्ड्स भी ऐसे हैं जो कि आपस में बहुत ज़्यादा मिलते भी हैं. That's true. ओके, तो अभी हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से हमाम का टूर स्टार्ट होता है. एक्चुअली 1635 में रिसेप्शनिस्ट दखलदार यहाँ बैठा करता था, जो कि आपको पैसे लेने के एवज आपको बाथ सोप, टॉवल और तहबंद देता था, ताकि आप इस हमाम को प्रॉपर अपने ड्रेस चेंज करके इसको यूज कर सकें. और यस, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये सर्विसेज वाला बात था, और सर्विसेज वाले बात में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट सर्विसेज दी जाती थी, लाइक मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेड मसाज, वार्म एरिया, स्टीम बाथ और ये सब. अब हम चलते हैं आगे, और आगे चलते हुए हम इसको देखते हैं. जैसे ही टिकट्स परचेज करके तो बाथ सोप टॉवल लेकर तो वो वेटिंग एरिया की तरफ जाते थे, और अपनी बारी के आने पर इस ठंडे हमाम को यूज़ किया करते थे. इस तरह के हिस्ट्री प्लेक्स आपको और भी बहुत से नज़र आएंगे. तो आप आगे चलें और आगे जाके मज़ीद अपनी नज़र से इसको एक्सप्लोर करें. ओके, बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. जहाँ आपको ज़रूरत महसूस होगी आप मुझे बुला लीजिएगा. आई एम अवेलेबल एनी टाइम. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. The artwork on the walls is so detailed. Zabardast. Architecture इतना अच्छा है कि you would not need any light in the daytime, क्योंकि skylights were perfectly articulated है. ये जगह इतनी पिक्चरस थी कि मैंने अपने करीब से बोला था to take some pictures for me.